ओके, तो रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, सी रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन. नाउ सी व्हाट विल डू. फर्स्ट फॉर दिस एलिमेंट, दिस पर्टिकुलर, ऐसा बोल दे रहा हूं. See, we will have a 2 cross 2 matrix and the elements are written as A11, A12, A21 and A2. Okay, ये तो पता ही होगा. ये वाला फर्स्ट पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. दिस पोजीशन इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. दिस पोजीशन इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम and this position is second row second column. Now, when we will find the elements after multiplication of the two matrices, this particular position is 1 1. Means what we will do, यहाँ से देख के first row element, this stands for row and this stands for column. It means first row element will be multiplied with first column element. Second वाला element के लिए first row element will be multiplied with second column element. तो देखते हैं, पहले A11 निकाल देते हैं. क्या होगा? row 1 element will be multiplied with column 1 element. So row 1 elements are 2 and minus 1. कॉलम में 1 elements are 4 and minus 3. तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और यहाँ पे देखो 4 नंबर है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड. 2 4 के साथ होगा, फिर सेकंड के साथ. -1 will be multiplied with -3. ठीक है, ये वाला होगा. Now A12 first row elements will be multiplied with second column elements. First row elements are 2 and -1. Second column elements are -2 and 5. So 2 into -2, 2 into -2 plus -1 into 5 plus -1 into 5. ठीक है, first element second element. Then the third element is what? Second row first column. Second row first column. This is second row and this is first column. मतलब second row first column. देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे पहले के साथ दूसरा के साथ. Means 1 into 4 plus 3 into -3. Okay. Then 1 into -2 plus 3 into 5. 3 into 5. Okay. This is second row second column. Second to second column. Now just answer निकालना बस. 2 into 4 is 8. -1 into -3 is 3. 8 plus 3 is 11. This is -4. This is -5. Therefore it's -9. 1 4. This is -9. 4 minus 9 is -5. -2 15. 15 minus 2 is 13. So product is A into B product is 11 minus 9 minus 5 and 13. तो इसी तरह करना है सारे क्वेश्चंस. ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 will start. See, in question 1 it's given A is given, B is given, C is given and D is given. Find the value of AB plus 2C minus D. AB plus 2C minus 4D का वैल्यू चाहिए. तो फर्स्ट राइट ऑल द मैट्रिसेस which is equal to A matrix will write 3 minus 2 minus 1 into 4 multiplied with whom? 6, 1 plus 2 whole into C. C is -4 into 5 minus 4 D. D is 2 2. D is 2 2. Okay. अब इसको मल्टीप्लाई करना है. Now before multiplying I'll tell you one thing. छोटा सा चीज. See, we will what we are doing is multiplying matrix A with matrix B and we are getting another matrix C. एक मैट्रिक्स होता है A, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स है A, फिर मैट्रिक्स है B, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा एक मैट्रिक्स आएगा, उसको मान लेते हैं C. अगर A का ऑर्डर m क्रॉस n है, if the order of matrix A is m cross n, then necessarily the order of matrix B has to be n cross P. मतलब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कॉलम्स n है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज n होगा. लास्ट वीडियो में बताया था. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स. और इसका रो और दूसरा वाला का कॉलम कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि m क्रॉस n, n क्रॉस m भी हो सकता था. मे बी इक्वल m इज इक्वल टू p भी हो सकता है, m नॉट इक्वल टू p भी हो सकता है ना. अगर ये तो वैलिड होगा m क्रॉस n, n क्रॉस p ना. जो आंसर आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, उसका ऑर्डर m क्रॉस p होता है. प्लीज रिमेंबर
if A matrix is n cross n, B matrix is n cross B, and if you multiply both the matrix, then the resultant matrix will have the order m cross B. Sequence please remember, m cross n cross B, answer will be m cross B. तो उस हिसाब से this is a 2 cross 2 matrix, देख लो 2 cross 2 matrix, and this is 2 cross 1 matrix. This is 2 cross 1 matrix, 2 cross 2 matrix, this is 2 cross 1 matrix. अब देखते हैं m cross n, this is n cross p, means m का वैल्यू 2 और p का वैल्यू 1, करेक्ट. m का वैल्यू 2 and p का वैल्यू 1, means after multiplying your resultant matrix will be of order 2 cross 1. This is the resultant matrix. After multiplication resultant matrix will be of the order 2 cross 1, means कैसे दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, कॉलम मैट्रिक्स की तरह 2 रो होंगे और एक सिंगल कॉलम होगा. ओके, नहीं तो छोटा टेक्निक है एक तो, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 2 मैट्रिसेस, जो छोटा वाला होता है ना, छोटा मैट्रिक्स, जो छोटा वाला मैट्रिक्स होता है, तुम्हारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी वही ऑर्डर का होगा, सेम ऑर्डर का होगा, सेम शेप का होगा. ठीक है, सो दिस इज रिजल्टेंट मैट्रिक्स, याद रख लो, ये फॉर्म लेकिन काम आता है. सो आई एम इरेजिंग एंड पता तो चल गया 2 cross 1 मैट्रिक्स है, मीन्स ऐसा ऐसा होगा. सो विल मल्टीप्लाई फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, 3 into 6, 3 into 6 plus minus 2 into 1. Okay, 3 into 6 plus minus 2 into 1. Now फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो है ही नहीं, तो हो गया अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 2 1 इधर आता था, a to 1 इधर आता था, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सो minus 1 into 6 plus 4 into 1, खत्म, 2 elements done. Then plus 2 multiply कर लेते हैं, 2 multiply अगर करोगे this will be minus 4, sorry 2 multiplying means we'll get minus 8, 2 into 5 is 10, then minus 4 2s are 8, 4 2s are 8. Now this is equal to 6 3 18, 18 minus 2, 18 minus 2 is how much, 16, 6 minus 6 plus 4 minus 2 plus minus 8, 10, then this is minus 8 and 8. Now in addition, this is simple addition and subtraction. Addition and subtraction means corresponding elements are added or subtracted. So your final answer is 16 plus minus 8 minus 8, then minus 2 plus 10 minus 8. So if you solve this, I think you will get 0 and 0. Okay, so this is your answer. Null matrix इसको बोलते हैं, because all elements are 0. This is null matrix. Okay, तो इसी तरह होता है. Question number 1 done. Then question 2. In question number 2, well, find x and y if this plus see, I'm writing 3 minus 2 minus 1 4 when multiplied with 2x 1 plus 2 whole into minus 4 5 is equals to 4 whole into 2y, 4 whole into 2y. Okay, now this will imply it's asked to find x and y, find x and y. So what I will do, multiply it, 3 into 2x, that will equal 3 into 2x is 6x plus minus 2 into 1 is minus 2, minus 1 into 2x minus 2x, 4 into 1 is plus 4 plus 2 into minus 4 minus 8, 2 into 5 10 is equals to 4 into 2 8, 4 into y, and this will imply 6x minus 2. Okay, directly add कर लेते हैं. 6x minus 2 plus minus 8 is 6x minus 10. Minus 2x plus 4 plus 10 is minus 2x plus 14. This will be equals to 8 and here 4y. And this will imply 6x minus 10 is equals to 8. Will imply x is equals to 18 by 6 is 3. And similarly minus 2x to x we got 3, minus 2 into 3 is minus 6 plus 14 is equals to 4y. So y is equals to 8 by 4, which is 2. Okay, तो ऐसे ही होता है, सिंपल सिंपल.
Then question number 3. See, it's given a is equals to 3 1 minus 1 comma 2 3 1 minus 1 and 2, and function of fx is given. Fx is given x square minus 5x plus 7. X square minus 5x plus 7. And it's asked to find f of x. See, if f of x, function of x इसको बोलते हैं. If f of x is x square minus 5x plus 7, then what will be f of a? F of a will be x की जगह a डाल देंगे. So f of a will be a square minus 5a plus 7. Okay. Now this will be a का square. See, if I add 4 square, then it's 4 into 4. Similarly, a square will be what? A into a. Okay, a square will be how much? A into a. It means a matrix will be multiplied again with a matrix. So a matrix is 3 1 minus 1 2. 3 1 minus 1 2. This is a. Again will be multiplied with a. 3 1 minus 1 2. Don't make it square. कि 3 का square 9 1 का square दोनों बनते हो जाएगा. दो बार इंटू करना है, ठीक? 3 1 minus 1 2. 3 1 minus 1 minus 5a 3 1 minus 1 2 plus 7. नो मैट्रिक्स के साथ नंबर तो ऐड नहीं कर सकते हो. मीन्स देखो कैसा होता है नंबर में. सपोज 5 की जगह कुछ नहीं है मतलब 5 into 1 है. 5 की जगह कुछ नहीं है मतलब 5 into 1 है. सिमिलरली 7 की जगह कुछ नहीं है. मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स होता है. दिस इज 7i. व्हाट इज i? i इज यूनिट मैट्रिक्स. ओके, व्हिच इज इक्वल्स टू, व्हिच विल इक्वल टू 3 into 3 9, 1 into minus 1, मैं तो लिख देता हूँ 3 into 3 plus 1 into minus 1. कितने मिनट? 2 मिनट. 8 मिनट. Then this is 3 into 1 plus 1 into 2. 3 into 1, 1 into 2. This is minus 1 into 3 plus 2 into minus 1. Minus 1 into 1 plus 2 into, okay, minus 1 into 1, 2 into 2. Minus 5 will be multiplied. 5 3s are 15, 5 1s are 5. This is minus 5, 5 2s are 10. Plus this is 7i. I means 1 0 0 1. Okay, now this will be 9 minus 1 8 3 8 minus sorry this is not 8, this is 5 3, then this is 1 into 2 2 3 plus 2 5. Minus 3 minus 2 is minus 5. Minus 1 into 1 is minus 1 to 4 3. This is 3. Minus this whole thing 15 5 minus 5 10 plus 7 0 0 7. Okay, 7 will be multiplied with each element, which is equals to, now corresponding elements will be subtracted and added as per the operation given. So this is 8 minus 15. 8 minus 15 is minus 7. Minus 7 plus 7 0. मैं तो स्टेप वाइज लिखूंगा ऐसा है. 8 minus 15 plus 7. This is 5 minus 5 plus 0. This is minus 5 minus minus 5 plus 0. This is 3 minus 10 plus 7. If you solve all the elements, you will get 0 0 0 and 0. So again this is coming out to be a null matrix. Okay, हमेशा से नहीं है, कभी आ सकता है. Then question 4. Question number 4. See, in question number 4, it's given a is equal to 2 0 minus 1 7. A square is equal to 9a plus mi. It's given a square is equal to 9a plus m into I. Find the value of m. And a matrix is given 2 0 minus 1 7. So I'll put here 2 0 minus 1 7 into 2 0 minus 1 7. 2 0 minus 1 7 is equals to 9 into 2 0 minus 1 7 plus m into 1 0 0 1. Okay, so which will imply 2 into 2 4. 0 into minus 1 0. So this is 4 plus 0. 2 zeros are 0 0. This is 0. 4 plus 0 is 0. Directly लिखना है. ठीक है.
Now -1 into 2 is -2. So -1 into 2 is -2. 7 into -1 is -7 plus -7. So -2 -7 is -9. Now this is -1 into 0. 0. 7 7s are 49. Is equals to 9 to 18. 9 0 0. 9 9. This is -9. This is 9 7 63. Plus this will be m0 0 m. Okay. Now इसको इधर ले आते हैं. This will become 4 0 minus 9 49 minus 18 0 minus 9 63 is equals to m0 0 m. Now we'll subtract. 4 minus 18 is minus 14. 4 minus 18 is minus 14 and 4 minus 18 कैसे 14 आना चाहिए भाई. क्या गलती क्या है ना. सही. 0 minus 0 is 0. Minus 9 minus 9 is 0. 49 minus 63 is minus 14 is equals to m0 0 m. Now if two matrices are equal, their corresponding elements are equal. मतलब आप देख सकते हो m की जगह -14. So therefore m is equals to -14. m is equals to -14. Okay. अच्छा. Now this kind of questions हो सकता है. Now one more type is there. आएंगे तो 3 मिनट. कितने? 3. One more type of question. जहाँ पे बोलते हैं कि मैट्रिक्स का वैल्यू निकालो, जैसे कि इस तरह का बोला होगा. क्वेश्चन नंबर शायद 5 ऐसा दिया होगा. इफ a is equals to 2 3 0 minus 2 and b is equals to minus 8 8. Find matrix x such that 2ax is equal to b. 2ax is equals to b. Now see, इस तरह का क्वेश्चन कैसे करोगे? See, what is the equation given? 2ax is equal to b. Okay. Now एक चीज कर सकते हो. This is 2 multiplied with matrix है 2 3 0 minus 2 multiplied with matrix x is equals to b matrix. B matrix is how much? -8 and 8. This is into 2. Constant है ना बाहर, उधर जाके तो by 2 कर सकते हो. This 2 will go there and it will become 1/2. Now this whole thing becomes 2 3 0 minus 2 matrix x multiplied with 1/2. This is -4 and this will be 4. Now we have to find matrix x and we do not know what is the order of x. We do not know what is the order of x. So first bit, before finding out the matrix, we have to find the order. कैसे करना है? सीक्वेंस याद रखोगे. पहले मैट्रिक्स को हमेशा ऑर्डर m क्रॉस n, दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर को हमेशा n क्रॉस p, और तीसरा वाला जो आंसर है उसका रिजल्ट बताया था m क्रॉस p. This order sequence you have to remember. Now write the user order. This is a 2 cross 2 matrix. This order we do not know, and this is 2 rows 1 column. So this is 2 cross 1 matrix. Now from this particular orders you can calculate the value of n and p, because we need n and p. n का compare करो, n का value 2 and p का value 1 means this is a 2 cross 1 matrix. ठीक है, तो x will be what? 2 cross 1 matrix. Now we know the order. Let matrix x, हमको नहीं पता 2 cross 1 matrix है मतलब 2 रो 1 कॉलम होगा, तो एक कॉलम मीन्स यहाँ पे x लिख देता हूँ और यहाँ पे y लिख देता हूँ. x और y हमको निकालना है. Let the matrix x be small x, small x and y, small y. Order is important, but otherwise how will you write? ऐसा लिखना है, row wise लिखना है, column wise लिखना है, that's important, right? तो x is equal to small x, small y. देखो था 10 सेकंड बंद करो.